Hello students. In today's lecture of free consent, we are going to discuss the last topic under this, which is the concept of mistake and what is the impact if the contract is entered into with mistake on the final outcome of the contract, that whether the contract will be void, in what cases it would be voidable, in what cases it would be void ab initio agreement, and in what cases it can be a valid contract. So we move on to the mistake part. Fraud we have already discussed in the last lecture. So you see that basically at the first instance, the mistake has been divided into two categories, that it can be either a mistake of law or the mistake of fact. Under the mistake of law, we have to see that if the mistake has been related to the law of land, that is the law of country wherein you are residing. So in the Indian Contract Act, we would say that if there is the mistake for the law that is existing in India, it will fall under the mistake of law of land, and this mistake is unexcusable. You cannot take an excuse, or nobody can say that I was not aware of the law of my country. When you are doing any kind of dealing, you are supposed to know the law related to that particular thing which is existing in your own country. So in case the mistake is related to the law of land, you cannot make that contract void or voidable. It will remain a valid contract, and the contract will be binding on both the parties, whether they knew the law or they did not know the law. The ignorance of law of land can never be taken as an excuse. Fine. Then we talk about if the mistake is related to the foreign law. So if some foreign country's law was applicable to that contract, and say you were one of the parties, you were not aware of that law, and due to that there was a mistake while entering the contract, then this would be treated same as the other mistake that now we are going to talk about, which is mistake of fact. So what we are saying till now, that there can be two kinds of mistake related to law and mistakes related to fact. If the mistake is related to the law of the country wherein you are a resident, the country where you belong to, then that is non-excusable. That will be a valid contract. If the mistake is related to the foreign law, it will be treated as the mistake of fact. Now, when we talk about the mistake of fact, it is further bifurcated into bilateral mistake and unilateral mistake. As the name suggests, bilateral mistake is one where both the parties to the contract are under a mistake, right? Both the parties are ignorant of the fact. And unilateral mistake is when only one of the parties is ignorant about the fact or has committed a mistake related to the facts of the object, subject matter, or about the person with whom the contract is being entered into. So we will discuss these one by one. Mistake of law, I have already told you that if the contract is related to the mistake of Indian law, that it is not voidable, it will be a valid contract. But if it is related to a foreign law, then in that case it will be similar, it will have similar impact as to the mistake of fact. In mistake of fact, in bilateral mistake, both the parties should be under a mistake. Fine, it is an important element. Second important element is that the mistake that is being done, the mistake that we are talking about is about certain fact of the case. So if there is a mistake related to my opinion, something which I just gave my opinion about, or something which is based on just my judgment and not the facts, then it won't come under the bilateral mistake. Both the parties should be under mistake of some fact, and this fact which is being mistaken for must be such which is important for the agreement or the contract. Then unilateral mistake, meaning I have already explained you that it is being caused by the mistake of one of the parties. Fine. Now,
What all would be the types of bilateral mistake? This we will discuss one by one. First is the mistake about the existence of subject matter. So both the parties enter into a contract. While entering the contract, both the parties are unaware that the subject matter, the product or the thing for which they are entering into the contract actually does not exist anymore, right? So two things are important, that subject matter that is being talked about for the contract does not exist at the time when the contract is being entered into, and second, both the parties are unaware of this. So we have taken an example that A agrees to sell some goods to B, right, which are in transit, shipment में है या आ रहा है, रास्ते में transportation हो रही है उसकी, and A has entered into a contract with B that I will be selling you those goods which are in transit. Now, when they were discussing this, when this contract was being entered into, actually within that transmit, the goods got damaged. ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, शिप में गड़बड़ हो गई, शिप डूब गई, या अगर ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्ट से आ रहा था वहां पर गुड्स डैमेज हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टीज को पता नहीं है, दे आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि वो जो गुड्स की बात कर रहे हैं जो ट्रांजिट में है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, then this is a bilateral mistake about the existence of subject matter and this agreement is void as both the parties were mistaken. ठीक है, हम इसको void ab initio नहीं कह रहे हैं, void कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब तक कॉन्ट्रैक्ट फुली लीगल था. बाद में because of one of the things that they came to know later that the object has been destroyed, it became void. Then second is about the title of subject matter. So in title of subject matter, if say I am selling something, मुझे लगता है ये मेरी चीज है, लेकिन actually it is not owned by me, this contract is void ab initio. Fine. So I think I am under a mistake that there is a thing which belongs to me, but actually it is not in my name. ठीक है, वो किसी और के नाम पर है, मुझे नहीं पता है इस बारे में, मुझे लगता है ये मेरी ही चीज है. मे बी यू नो माई ग्रैंड फादर और माई फादर हैज पास्ड इट ऑन टू मी और माई मदर हैज पास्ड इट ऑन टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका टाइटल ऑफ गुड जो है वो मेरे पास है, बट एक्चुअल में मेरे पास नहीं है, एंड आई सेल इट ऑफ. देन it is a void ab initio agreement and no party will be liable for the damages, only the rescission of the contract would be there. Then there can also be a situation wherein a person agrees to buy something, but later on both the parties come to know that something he was trying to buy already belongs to him or her. So in this case, it is unknown to both the parties, right, that who is actual owner of that particular subject matter. Say for example, there is a person who has two daughters and has one nephew. So in his will, he has given some property to his daughters and some property to his nephew. And one of the property is say a farmhouse, right, which in his will he has already written in the name of nephew. Now this person dies and the nephew, he really wanted to have that farmhouse. He is still not aware that the farmhouse already belongs to him क्योंकि उन्होंने will अभी नहीं देखी है. They just assumed कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी डॉटर्स के पास जाएगी. सो दिस बॉय ही गोज टू हिज कजन सिस्टर्स एंड टेल देम दैट आई वांट टू बाय दिस फार्म हाउस, सो यू सेल इट ऑफ टू मी. The daughters are also under the impression that the entire property is in their name. The nephew is also under the impression that his uncle has given entire property to his own daughters. So they enter into a contract wherein these girls agree to sell that farmhouse to nephew. Now later on it comes to their knowledge that actually this farmhouse already belongs to nephew who is trying to buy, but it is unknown to both of them, right? So this again becomes a void ab initio contract.
Then is about the quantity and quality of subject matter. One of the cases written over here in Cox versus Prentice, wherein they agreed to enter into a contract for a gold bar, and both the parties were mistaken about the weight of the gold bar, so the agreement becomes void agreement. Similarly, there is another case related to quantity of subject matter, which is Hankel versus Pope. Now herein what happened, this person Pope, he inquired about the price of rifles. He wanted to buy some rifles, so he inquired about the price of rifles from Henkel, and while inquiring he said that I may buy up to 50 rifles. I can buy as many as 50. Now Henkel, he quoted the price for 50 rifles, that 50 rifles will cost you this much. Now Pope, after receiving that quotation, sent a telegraph and he said, send me 3 rifles. Okay? So he wanted to buy 3 rifles only. Now while the telegraph clerk was typing the telegraph, पहले telegraph भेजे जाते थे, typed message होते थे, वो आपको जाके भिजवाने पड़ते थे, तो जो clerk था वहां पे जो type कर रहा था, उसने गलती से 3 की जगह the type कर दिया, THE. तो सेंड 3 राइफल्स की जगह जो मैसेज है वो बन गया सेंड दी राइफल्स. तो जो हेंकल है उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा सेंड दी राइफल्स का मतलब है, उन्होंने पहले कहा था कि वो अप टू 50 राइफल्स खरीद सकते हैं, तो उन्होंने 50 राइफल्स भेज दी. राइट, 50 राइफल्स वर सेंट टू पोप. नाउ पोप सेड दैट आई विल टेक ओनली 3, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 3 राइफल्स चाहिए थी, मुझे बाकी 47 नहीं चाहिए. सो ही रिटर्न 47. Now Henkel filed a suit that he should be paid the damages, क्योंकि 47 राइफल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की गई, जबकि उससे 50 राइफल्स बाकी गई थी. यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, because there was no meeting of minds related to quantity of matter. Although the mistake was done by the third party, but actually one of you wanted to buy only 3 rifles, another was under the mistake that 50 rifles are to be given. So although it was caused because of negligence of the third party, but actually there was no consent which was between you two. No consent was existing between you two. Right? Bilateral mistake में होता ही यही है कि आपका एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंसेंसस है ही नहीं. Okay, in most of the cases it's not कि फ्री कंसेंट नहीं है, कंसेंसस ही नहीं है, कंसेंट है ही नहीं चीज को लेकर के, तो वहां पर जनरली आपके वॉइड एबिनिशियो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपने कुछ बोला, सामने वाली पार्टी ने कुछ समझा. टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपके पास टाइटल था ही नहीं उस गुड्स का, फिर भी आपने बेचा, तो ये वॉइड एबिनिशियो अग्रीमेंट्स हो जाते हैं. देन क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगेन let us take an example that there are 2 people who are entering into a contract for a particular painting. Now both are mistaken about the facts of this painting. दोनों को लगता है कि ये original painting है और उस हिसाब से they enter into the contract. बाद में पता चलता है कि वो original painting नहीं है, it was just a replica of that original painting. ठीक है, वो change हो चुकी है, वो original है नहीं, लेकिन दोनों parties were under the mistake. That is why it is a bilateral mistake. So in this case, again, the agreement will be void. It will be a void ab initio thing, because they were not, right at the beginning when the contract was being entered into. There was a mistake about the subject matter, about the quality of the subject matter. So actually, the contract never came into picture. So it becomes a void ab initio contract, because the quality, what they were thinking of, is different, and both the parties are under this mistake. Now coming on to unilateral mistakes, as I have already said that it is the situation when only one of the parties is mistaken about the material facts to the contract. Now what will be the impact or what will be the effect of such contracts? It can be a valid contract if the mistaken party, because there is only one party who is under mistake, और वो उनका जो mistake है that is because of their own negligence. उन्होंने ठीक से चीजें नहीं देखी या उन्होंने ठीक से चीजों को नहीं समझा, इस वजह से mistake हुई. So it is up to them कि उन्होंने ऐसी mistake क्यों की. अगर वो due diligence से काम करते, negligent नहीं होते, तो ऐसी mistake नहीं होती.
इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। फाइन। हमने अभी पेंटिंग वाला एग्जांपल ऊपर लिया जहां पर हमने कहा बोथ द पार्टीज वर अंडर द मिस्टेक, क्योंकि दोनों को लगता था वो ओरिजिनल पेंटिंग है, तो वो वॉइड एब इनिशियो हो गया। नाउ कंटिन्यूइंग विद दैट एग्जांपल, से इफ the buyer, right, he assumes that it is an original painting, उसको सेलर ने कुछ नहीं बताया, ना ही उसने सेलर से पूछा, और सेलर ने कहीं भी अपने एक्ट से, अपनी डीड से या कहीं रिटर्न में कहीं नहीं कहा कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, वो पेंटिंग सिर्फ वहां शॉप में पड़ी है। अब बायर ने अपने आप ही सोच लिया कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है और उसको खरीद लिया, तो इट इज अ यूनिलेटरल मिस्टेक, बिकॉज शॉपकीपर को तो पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, बायर को नहीं पता। ठीक, तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक है। और इफ द बायर वुड हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट, अगर उन्होंने पूछ लिया होता या प्राइस को देख लिया होता, क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट के प्राइस में बहुत डिफरेंस होगा, सो इफ ही वुड हैव बीन अ बिट मोर डिलिजेंट, तो वो ये मिस्टेक नहीं करते। तो इस केस में जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकती, इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में अगर हम एक चीज और लें इसी एग्जाम्पल में आगे, कि सेलर को मालूम है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, बायर को नहीं मालूम है। ठीक, ले और ए जो सेलर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। ठीक है, वो इस तरह से शो करते हैं कि नहीं जी ये तो ओरिजिनल पेंटिंग है, ऐसा बोलते हैं, या अपने एक्ट से ऐसा शो करते हैं दैट दिस इज एन ओरिजिनल पेंटिंग, देन इन दैट केस इट विल बिकम फ्रॉड। ठीक है, फिर वो मिस्टेक में नहीं आएगा, फिर वो फ्रॉड में चला जाएगा, क्योंकि नोइंगली आपको फैक्ट्स पता हैं फिर भी आप उनको गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, सजेशन ऑफ फॉल्सहुड, सो इट विल गो अंडर फ्रॉड इन दैट केस। Okay, coming on back to the unilateral mistakes, the contract under unilateral mistake can be a voidable contract। वो कब होगा, जब जो यूनिलेटरल मिस्टेक है, जो एक पार्टी से मिस्टेक हुई है, दैट इज बिकॉज द अदर पार्टी हैज मिसरिप्रेजेंटेड और हैज कंडक्टेड फ्रॉड, उस केस में वो voidable हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, जैसे कि फ्रॉड के केस में होता है। Then there would be some cases wherein because of unilateral mistake it would be a void ab initio agreement. You know, that is why if you remember at the beginning when we were discussing the various things which can lead to an unfree consent, उसमें हमने कहा था mistake के केस में contract valid भी हो सकता है, void भी हो सकता है, voidable भी हो सकता है, depending upon the circumstances and depending upon the type of mistake. So if you see in unilateral mistake, we can have a valid contract also, voidable also, and a totally void ab initio contract as well, agreement as well. So when it would be void ab initio, वहां पे दो चीजें हैं, mistake as to identity of person, this I'll come to later on. First I'll discuss mistake as to nature and character of written document, कि जो parties contract में enter कर रही हैं दोनों उस रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में अलग अलग बातें समझ रहे हैं। इफ यू रिमेंबर आई गेव यू एन एग्जाम्पल अर्लियर, इट इज द सेम केस बाला देवी वर्सेस मजुमदार, wherein an old illiterate woman thought that she is signing an agreement wherein she is giving rights to her nephew to look after her estate, to look after her property, क्योंकि वो old हो चुकी हैं, वो नहीं take care कर सकती। But actually that document was a gift deed which would name the property in the name of the nephew. So old woman, illiterate woman who could not read the document, was not aware about it, उसको किसी ने बताया भी नहीं कि क्या है उस document में, she signed that document thinking that it is only giving him the rights to look after my property, but actually it was a gift deed. तो उस केस में क्या होगा, this would be mistake as to the nature and character of the written document. And what would be the impact? It would be void ab initio, because there is no consensus addendum, there is no meeting of minds. Then mistake as to identity of person, especially when the identity is important. ठीक है, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, अगर वहां पर पर्सन की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है and there has been mistake related to the identity, then it would be void ab initio. There is a case law written over here, Said versus Butt. Now in this, Mr. Butt was having a theater company, ठीक है, जहाँ पे plays वो लोग organize करते थे.
Now this person but who owned that theatrical company was very clear about it, and he gave specific instructions to his staff that no ticket should be sold to this person's side, because he was a critic and he used to give very bad reviews about the plays of their theatrical company. So he said कि हमें उन्हें कोई टिकट नहीं बेचनी है सईद को. अब सईद को ये बात पता थी कि मुझे कोई टिकट नहीं बेची जाएगी इस थिएटर कंपनी की, तो उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया टिकट लेने के लिए. तो किसी और ने टिकट खरीदी और वो टिकट उन्होंने लाके सईद को दे दी. Now when Said went to one of the plays to watch one of the plays, he was denied the entry. He filed a case कि मेरे पास टिकट है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ और ये मुझे नहीं जाने दे रहे हैं अंदर. वहां पर कोर्ट ने कहा कि आपके साथ उस कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट and they were very clear that they do not want to enter any contract with you, they do not want to sell tickets to you, so this ticket does not belong to you. There is no contract between the theatrical company and between you, so there is no contract that exists. Fine. Then mistake, there is another thing related to this only which we call as mistake as to attribute. वहां पर थोड़े से circumstances जो हैं वो change हो जाते हैं. Mistake as to attribute का मतलब है कि say social status of the party, ठीक है, उसके बारे में कोई mistake हुई जिसकी वजह से आपने contract enter किया, तब वो contract void नहीं रहता, वो contract voidable हो जाता है. Right? So somebody shows that I am a very rich person, ठीक है, कोई fake name, fictitious name बना लिया मैंने और मैं सामने वाले को ऐसे दिखा रही हूँ that I am a very rich person, I have a lot of properties, I have a lot of money in my bank account, और सामने वाला जो है convince हो जाता है. ठीक, तो वहां पर he is having mistake as to my attribute and not as to my identity. वो मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते थे बट वॉज मिस्टेकन अबाउट माई एट्रीब्यूट. तो ये फ्रॉड के केस में चला जाएगा, और जब फ्रॉड के केस में चला जाएगा तो वहां पर मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी एंड मिस्टेक एज टू एट्रीब्यूट में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं. व्हेन देयर इज अ मिस्टेक रिलेटेड टू आइडेंटिटी, ठीक है, वो कब होगा, उसमें ये बहुत जरूरी है कि जो आपको मिस्टेक हुई है आइडेंटिटी को लेकर, उस नाम का, उस आइडेंटिटी का पहली बात कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, देयर इज अ रियल पर्सन ऑफ दैट नेम, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो कह रहा है कि मुझे मिस्टेक लगी है अबाउट द आइडेंटिटी, वाज अवेयर अबाउट दैट एक्चुअल एग्जिस्टिंग पर्सन, और वो उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते थे. ठीक है, लेकिन किसी और ने फेक सिग्नेचर करके या फेक रिप्रेजेंट करके उनसे एंटर करवा लिया, तो वो हो गई मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी. मिस्टेक एज टू एट्रीब्यूट क्या है कि आपको नहीं पता कि उस नाम का कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ठीक है, हो सकता है वो एक फिक्टिशियस नेम यूज करके किसी ने किया, आपको ऐसा लगा कि सामने वाला जो है वो रिच है, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है और इसलिए आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, उसने आपको आपने उसको कुछ गुड्स दे दिए. ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा भी था कि देयर इज अ गर्ल हु कम्स टू योर स्टोर एंड जस्ट tries to show off that she belongs to a very rich family, her father is very rich, और उससे इम्प्रेस होके वो चेक साइन करके दे देती है और शॉपकीपर उनको रिंग जो है, एक गोल्ड की रिंग, डायमंड की रिंग दे देते हैं विदाउट गेटिंग द चेक क्लियर्ड. ठीक है, तो उस केस में क्या है, दैट इज मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी. राइट? So in that case, the contract will only be voidable, whereas if it is mistake related to identity, the contract will be void. And another important difference is कि हमने कहा था अगर इस तरह की मिस्टेक होती है और थर्ड पार्टी के पास कोई राइट्स चले जाते हैं, then there is a loss of right of rescission of the contract, which means if there is a mistake as to attribute, जो हमने अभी केस लिया कि रिंग खरीद ली उन्होंने, चेक बाउंस हो गया, जाकर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जाकर उन्होंने आगे इसको किसी थर्ड पार्टी को सेल ऑफ कर दिया या किसी थर्ड पार्टी को देकर उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए लोन पर. वो थर्ड पार्टी इज अ बोनाफाइड पार्टी, उनको नहीं पता था कि ये फ्रॉड से ली गई है
ठीक है, या किस तरह से गलत तरीके से ली गई है रिंग। तो उस केस में हमने क्या कहा था कि थर्ड पार्टी के राइट्स जो हैं वो होल्ड करेंगे, थर्ड पार्टी के राइट्स आप वापस नहीं ले सकते हो। बट इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है, विच मीन्स वॉइड अब इनिशियो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। तो उस केस में अगर थर्ड पार्टी के पास कोई राइट्स चले भी गए हैं और वो थर्ड पार्टी बोनाफाइड पार्टी है, दे आर डूइंग इट इन द करेक्ट स्पिरिट, स्टिल the third party will not hold the rights. Fine. So that is another important difference between whether it is a mistake as to identity or mistake as to attribute. And that brings us to the end of this chapter. Thank you.